Hello and welcome everybody students. Today we will discuss about excretion, okay, and removal of waste by their elimination. So the name of the topic for today is excretion, okay, excretion बा तमे एक्सक्रेशन होची तुम टॉपिक नेम आइछ है ना तो किंतु एक्चुअली तुम सिलेबस रे अछि तमरो जो नेम रे ई चैप्टर अछि दैट इज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड दे आर elimination and their elimination. Clear? So for today we will start a new topic, excretory products and their elimination. Okay, so you may before starting I have starting this chapter, I will like to inform you that you can revise the circulatory system. I have already uploaded all the video of circulation related to heart and body fluids in my YouTube channel. You can watch that videos before this chapter. It will be good for you. Otherwise, there will be some problem. There may be. But I think there will not be some any problem because I have to elaborate you. Clear? तुमको जदि तुम चाहूच बेसी अधिका मैक्सिमम लेवल ले बुझिया पई तो तुम एक्सक्रेशन ले पूर्वरु जदि किछि पारिबो ताले जो हमर बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन हार्ट चैप्टर विषय रे अछि से विषय रे किछि किछि एटलीस्ट रिवाइज कर दबो जो माने पढितबो आ जो माने नुआ आछो से मानक पई भी हमर सर्कुलेशन चैप्टर रे सब वीडियो अछि म YouTube चैनल ले हला तमे सेठी देखि दियो हला विशेष करके बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन रहिला टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आउ तार जो ब्लड वेसल्स रहिला कैपिलरी वेन से विषय टिके जानि दबा जदि जानिछ ताले किछि असुविधा नाही क्लास 10 ले भी तमे पढि दिबो ऑलरेडी से विषय आ टिके डिस्कशन भी एठी म करि देबि तुम सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रेशन ओके एज इट्स नेम सजेस्ट द चैप्टर नेम सजेस्ट एक्सक्रेशन बाय एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट क्लियर सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन कहिले आमे कौन बुझंती क्या समझते हैं एक्सक्रेशन का मतलब क्या है सो हाउ वी विल डिसाइड बा डिफाइन एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन मीन्स removal. This is the simplest definition, no other complex definition is needed for you. You have to also remember the various definition throughout your syllabus, so you should remember the simplest definition of every physiological process. It may be circulation, it may be nervous system. What do you mean by neural control and coordination? What do you mean by excretion? What do you mean by respiration? So there are simplest definition in each subject or each chapter. So in this case, how we will define excretion? It means removal of waste, but you may also write metabolic waste, removal of metabolic waste from the body, I am referring from the body. It means it also includes your blood because blood is present in your body. Also it includes your lungs because lungs is also present in our body. Also it will refer to our skin because skin is present in our body. Okay,
from the body, removal of metabolic waste from the body is known as excretion. So whatever we excrete from the body, that products, but that waste materials are known as excretory products. Clear? Excretory products. And the process by which we will excrete the waste material from our body will be known as excretion. What is excretory product? That whatever we excrete by this process is known as excretory product, and the process is excretion. So in excretion, what are the excretory products mainly? It may be sweat. Sweat is a metabolic waste by excretory product, because we excrete sweat. Sweat means jhala jota kochundi. Sweat, okay, and feces. दुई कला बेले जोटा आमर बाहर फेसेस बा स्टोल कही पार है ना, बेटा स्टोल कहते आउ कौन ना मेन वेस्ट जोटा आम बॉडी रिमूव हुए, दैट इज योर नाइट्रोजिनस वेस्ट. वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नाइट्रोजिनस वेस्ट. एंड व्हाट अदर? Also carbon dioxide, because in respiration chapter I have already told you this is a waste material, this is a respiratory waste material, but it is, as it is excreted from our lungs through nose into the environment, so it will also be considered as a excretory product, etc. Clear? So these are mainly the waste that are produced by, that are removed from the body. Clear? But in this chapter we will only deal with nitrogenous waste and some other waste, because in the carbon dioxide we have deal it with the chapter respiration. Yes or no? In respiration chapter we have already deal with this respiratory waste, and in sweat it is also present in another chapter. Clear? And feces and stools, that is egestion process, okay, it will it will be deal with by in digestive process, by digestion chapter, digestive system. Clear? So though all are the excretory products I have mentioned here, but we have to deal this in different chapters. In this chapter we will only deal with the nitrogenous waste and some other waste. I will tell you about what others. So in this chapter, along with nitrogen waste, we will also deal with excess, removal of excess water, excess vitamins, okay, pigments, for example bile, and drugs. That means whatever we have consuming in form of medicine, the traces of that drugs, that medicine will be removed after its function. तमर बॉडी रे जतिकी मेडिसिन काम आसला से तो बॉडी रे यूज हो गला, बॉडी रे काम यूटिलाइज है, बट बाकी जो ट्रेस बळीज जोड़ा आम बॉडी रे दरकार हेनी. थर कि आमको ज्वर होती कि कौन वायरल फीवर होती आम मेडिसिन खाऊँ तो आमको पूरा डोजटा खावा हुए, हाँ ना नहीं, तो किसी दिन पर तो ज्वर छाड़ी जाए, किंतु जो एक्सट्रा डोज खाऊँ तार बहुत कम अमाउंट यूज हुए, आ बाकी सब कौन हो जाए बची जाए. दैट trace amount of drugs, that trace of drug should be removed, because it is regarded as a waste material in our body. So we will deal specifically in this chapter about nitrogen waste, excess of water, and excess of vitamins, pigments. Among these nitrogens, among these waste that will be dealt in this chapter, nitrogen waste is the most important and most vital product, metabolic waste, in the form of metabolic waste, which should be deal with greater priority. Clear?
So let's start. This is all about your introduction. What is excretion, what is excretory product, what type of products we will deal in this chapter, which type of respiratory excretory waste material. So in this chapter now we will discuss about your nitrogenous waste. Okay. Nitrogenous waste. This is the main waste material that is removed. Excretion means remove. Kadhi daba body ru. That is known as excretion, but removal of waste. So mainly we will discuss about nitrogenous waste. It means the waste which contains nitrogen. Clear? That means the waste material of our body that is contains nitrogen is known as nitrogenous waste. For example, ammonia, urea, uric acid, all these things are nitrogenous waste. Okay. So before dealing with nitrogen waste, we have to also know about how these are formed inside our body. So formation of nitrogenous waste, how it is formed in our body. Formation of nitrogenous waste. N waste matlab nitrogenous waste. N waste like it means nitrogenous waste. How it is formed in our body. Especially the nitrogenous waste are formed from two sources in our body. There are two different sources of nitrogen waste. जो जिनसटा आम बॉडी फॉर्मेशन होची सेटा आसुची कोट. How it is formed in our body. So formation of nitrogen waste mainly comes from two sources. Hala, two sources means uscha जोटी से आसुची. So it means there are two sources, which is one is external source and another one is internal source. And external source of nitrogenous waste includes the proteins present in our food materials or foodstuffs. Whatever we are eating, whatever proteins we are eating, that will be the source of nitrogenous waste. And why it is external sources? Because the foods are taken from outside. Okay? Food जो हम खाऊँ सेटा बाहर जिनस. It is an outer stuff, outer product, it may be a plant product, it may be animal product that is not belongs to us. Yes or no? तो सेटा को हमें खाऊ जंती. That means that is the external source. And ता भीतर कौन अच्छी? It contains protein. And protein भीतर कौन अच्छी? ना nitrogen अच्छी. And जतल protein टा excess है जो जतल protein टा हमारा कौन सी कामर आसी बनी excess protein वाला सेटा waste रूपे रिगार्ड करा जाए, ट्रीट करा जाए. एंड इंटरनल सोर्स नाइट्रोजन वेस्ट इंटरनल सोर्स के देखो नाइट्रोजन वेस्ट मुझे कौन कहली नाइट्रोजन वेस्ट मेन सोर्स होची प्रोटीन. फ्रॉम प्रोटीन नाइट्रोजन वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड. एंड प्रोटीन कहाँ से आता है? प्रोटीन दो सोर्स से आता है. वन इज एक्सटर्नल सोर्स, बाहर से भी आ सकता है. इंटरनल सोर्स हमारे बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस्ड होता है. इट मीन्स द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन आउटर फूड एंड द प्रोटीन्स present in our body. As it is present in our body, various proteins are there in our body. So when that protein will break down, it will produce nitrogenous waste. As it is
performed and its breakdown process is performed inside our body. That means the protein which will be broken down to produce nitrogen waste will be an internal sources. And if we consume food from outside of the body, from outer environment, whatever we consume food, that will be the external sources, and in that sources there is protein, and if when protein will be digested, protein will be break down, we also get nitrogen waste. समझ में आ गया ना? नाइट्रोजन दो तरह का उत्स होता है, वो सोर्स दो तरह का होता है. एक्सटर्नल बाहर से हम लेते हैं, खाते हैं, एंड अंदर में भी हमारा अंदर में भी प्रोटीन है, वो जब ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेस्ट होगा, उससे जो वेस्ट निकलेगा वो भी नाइट्रोजन वेस्ट कहलाएगा. समझ में आ गया? ये रहा हमारा कौन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट. ओके, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट मीन्स द वेस्ट व्हिच कंटेन नाइट्रोजन. जी जब क्षारजान धरी जो वेस्ट भितर जब क्षारजान अच्छी ताकू कहती जब क्षारजान जातीय वेस्ट वर्ज्य वस्तु बा नाइट्रोजनस वेस्ट इन इंग्लिश. So what are the types of nitrogenous waste? That means we are dealing with different types of nitrogenous waste. Is it clear? Types of nitrogenous waste. Mainly there are there are 5 types of nitrogenous waste, but in this chapter in your syllabus there are mainly 3 types of nitrogen waste. One is ammonia, another is urea, another one is uric acid. Is it clear? Types of nitrogen waste. कितने type अच्छी? How many types? Now there are mainly 3 types. One and 2 more types also are present. Hello, ammonia, but in your chapter there are mainly 3 types. One is ammonia, this is first type. Urea, this is also a second type of nitrogen waste, and another one is uric acid. So mainly 3 types of nitrogen waste are present in your syllabus. So in ammonia, the chemical formula is NH3. Urea is NH2CuNH2, and in your amino acid, our uric acid C5H4N4O3. Okay, these 3 types of, you have to remember these 3 types of nitrogen waste, and basing upon these 3 types of nitrogen waste, there are the modes of excretion also classified into 3 types. समझ में आ गया ना? ये इसके ऊपर बेस करके, इसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा 3 टाइप्स ऑफ और 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन अच्छी. समझ में? एक या उपरे बेस करिकी 3 प्रकार कौन अच्छी, ये 3टा जो नाइट्रोजन वेस्ट रहा ता उपरे बेस करिकी 3 प्रकार एक्सक्रेशन अच्छी बा 3 प्रकार मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन अच्छी. So we will deal about that also in this class. Clear? So you have to remember all the formula and all the name of types of nitrogenous waste. जो जते प्रकार नाइट्रोजन वेस्ट रहा ता टाइप सब मन रखियो. So now we will deal about ammonia, urea and uric acid. Clear? Modes of excretion. Now we will deal about modes of excretion. Clear? Modes of excretion. What are the modes? How these nitrogen waste are removed from the body? केमिति आम बॉडी रू ये एक्सक्रिएट होची, जो प्रोसेस रे ये एक्सक्रिएट होची बॉडी रू बाहरी जाउची, तो से प्रोसेस रो ना सब कौन? एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. एमाने सेम प्रोसेस रे बाहरुचंती ना? दे आर आल्सो डिफरेंट. जो अलग अलग प्रोसेस रे से माने आम बॉडी रू बाहरुचंती है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स.
actually there are different types or different modes of excretion. For example, modes of excretion, there are 3 modes. Modes means how it will excretes from our body. Modes of excretion. There are 3 modes of excretion of nitrogenous waste. है कहा उपरे बेस करके जो 3 प्रकार एक्सक्रेशन मोड अच्छी बा 3 प्रकार मोड ऑफ एक्सक्रेशन अच्छी ये कहा उपरे बेस करके 3 प्रकार मोड जो तांका ना दिया है ना नाइट्रोजन वेस्ट बेस्ड अपन बा बेस्ड अपन द टाइप और बेस्ड अपन द टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट है ना। आमे जो मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन को क्लासीफाई करवा 3 टाइप अच्छी से जो 3 प्रकार अच्छा यहाँ क्या उपरे बेस करके 3 प्रकार आम कहते ना से कौ टाइप नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रेट कर गोटे एनिमाल गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौ टाइप नाइट्रोजन वेस्ट 3 प्रकार कहली गोटे एमोनिया गोटे यूरिया गोटे यूरिक एसिड एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड तो ता भीतर से कौ टाइप नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रेट कर डिपेंड करके आमर 3 प्रकार बा 3 टाइप बा 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रिएशन अच्छी जोटा कि आम ए डिस्कसन करवा। सो बेस्ड अपन द टाइप्स और बेस्ड अपन द नेम ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट देयर आर 3 मोड्स ऑफ excretion. So what are those 3 modes of excretion now? Actually first one is among these 3 modes of excretion, one is ammonotelic. This is the first mode of excretion, okay, in animals. And second one is ureotelic, but it ammonotelic no, ammonotelism, LISM. It has the ureotelism. This is the second mode of excretion. And third one is यूरिकोटेलिज्म. समझ में आ गया कितना मोड्स है, मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन कितना है ना, देयर आर 3 मोड्स ऑलरेडी आई हैव रिटन दिस अबव 3 modes. What are those? One is ammonotelism, another one is ureotelism, and last one is uricotelism. We have to deal these 3 types of modes of excretion separately in this chapter. Okay, so what are ammonotelism, what are ureotelism, and what are uricotelism? So we have to deal it separately one by one. Okay. So first we will deal with ammonotelism, and the rest the 2 modes of excretion we will deal with next class. Okay, I will deal with ammonotelism in this class, and the rest 2 modes of excretion we will deal in another class or next class. So what is ammonotelism? एमोनोटेलिज्म क्या है? तुम्हारा बुक्स में अंदर है, तुम्हारा सिलेबस के अंदर भी है, लिखा है एमोनोटेलिज्म विषय में पढ़वा दी। एमोनोटेलिज्म क्या है ना, इट इज ए मोड ऑफ एक्सक्रेशन, इट इज ए टाइप ऑफ एक्सक्रेशन इन व्हिच एमोनिया इज रिमूव्ड एज द नाइट्रोजन वेस्ट. एमोनोटेलिज्म इज द टाइप or mode of excretion. Okay, it is the type of excretion or mode of excretion in which ammonia
ammonia, that is NH3, ammonia is removed. Ammonia is a nitrogen waste, it is a waste material, so it should be removed from the body. Ammonia is removed, okay. If the type or mode of excretion in which ammonia is removed is nitrogenous waste, okay, from our body, से कहूँ जो टाइप बा जो मोड ऑफ एक्सक्रिएशन ले कौन हुए ना एमोनियाटा नाइट्रोजन वेस्ट रूप आम बॉडी रू बाहरी जाए, एक्सक्रेट हो जाए, सही प्रोसेस को, सही मोड ऑफ एक्सक्रिएशन को आम कौन कहवा छुआ एमोनोटेलिज्म. द टाइप और द मोड ऑफ एक्सक्रिएशन इन व्हिच एमोनिया इज रिमूव्ड एज द नाइट्रोजन वेस्ट. नाइट्रोजन वेस्ट तो डिफरेंट टाइप रही, एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, किंतु जो मोड ऑफ एक्सक्रिएशन ले, जो एक्सक्रिएशन प्रोसेस रे एमोनिया नाइट्रोजन वेस्ट रूप बाहर आर दुटा कथा से कहूनी. एमोनिया जो एक्सक्रिएशन ले बाहरी जाए, बॉडी रू बाहरी जाए नाइट्रोजन वेस्ट रूप वर्ज्यवस्तु रूप, तो सही प्रकार एक्सक्रिएशन को आम कौन कहवा एमोनोटेलिज्म. समझ में आ गया. सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ एमोनोटेलिज्म. एंड in ammonotelism, what is the nitrogen waste? ना the nitrogen waste is nitrogen waste क्या है तुम्हारा? Nitrogen waste क्या है in ammonotelism, which is the nitrogen waste? It is ammonia, and the animal who perform ammonotelism is known as ammonotelic animal. समझ में आ गया. ammonotelic जो एनिमल एमोनिया को एक्सक्रेट करे बा जो एक्सक्रेट करे एमोनिया बा जो एनिमल एमोनोटेलिज्म देखाए से प्रकार एनिमल को आम को क्लास रे इंक्लूड करवा एमोनोटेलिक एनिमल. समझ में आ गया. सो द कैटेगरी ऑफ एनिमल व्हाट विल बी द एनिमल व्हिच प्रोड्यूसेस ammonia as nitrogen waste or which perform ammonotelism as their mode of excretion, that type of animals will be called as ammonotelic. Ammonia, from ammonia it is called as ammonotelic. Similarly, if urea is excreted, that process will be ureotelism. इधर क्या है एमोनिया, इसलिए एमोनोटेलिज्म एमोनोटेलिक है. अगर यहाँ पे यूरिया होगा तो यहाँ का क्या लिखा जाएगा यूरियोटेलिज्म एंड द एनिमल विल बी यूरियोटेलिक. अगर इस एमोनिया की जगह यूरिक एसिड होगा तो मोड ऑफ एक्सक्रिएशन क्या होगा यूरिकोटेलिज्म एंड द एनिमल विल बी कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक एनिमल. तो देयर आर 3 different types of. So in ammonotelism nitrogen waste is your ammonia and the animals are will be known as ammonotelic animal. Clear? And what is the source of ammonia? How ammonia is produced in our body, that is also a topic of interest. How ammonia is produced in our body. Hello. Normally ammonia is derived from amino acid. And where amino acid also derived? Amino acid is derived from protein. समझ में आएगा ना. प्रोटीन लो के डेराइव होइछि एमिनो एसिड आसला. एमिनो एसिड रो के आछि एमोनिया आछि. को प्रोसेस रे ना इन ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन. सो इन ऑल ओवर प्रोसेस फर्स्ट द सोर्स ऑफ एमोनिया इज प्रोटीन. फर्स्ट सोर्स टू सोर्स था, दुटा सोर्स कथा कही. तो फास्ट है प्रोटीन. प्रोटीन लो किए किस मिल आमको प्रोटीन मिल आमको एमिनो एसिड. तो एमिनो एसिड रु कौन मिल आम कौन पाइबा एमोनिया. समझ में आ गया ना बेटा. आम जो एमोनोटेलिज्म भितर आम नाइट्रोजन वेस्ट बा एमोनिया,
ये एमोनियाटा आसूची केमी आम बॉडी रे कौन डायरेक्टली आम बॉडी रे आम नौ कि बाहर ना छुआ आम डायरेक्टली प्रोटीन नौ बॉडी भितर को आम बॉडी भितर प्रोटीन तैयारी होची प्रोटीन भांगिले कौन दबो एमिनो एसिड रे जेतले ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस हो एमिनो एसिड भितर कौन अच्छी छुआ एमोनिया अच्छी एमिनो एसिड भितर तो से एमोनिया को बाहर करने ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस गुटे हुए तो एमिनो एसिड रो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है कौन हुए एमोनिया प्रोड्यूस हुए तो मन रहा आम कौन पढ़ुं एमोनोटेलिज्म रे वेस्ट किए एमोनिया केमिति प्रोड्यूस होची से विषय पढ़ुं तो एमोनिया केमिति प्रोड्यूस होबो ना एमोनिया प्रोड्यूस होबा पई प्रोटीन दरकार प्रोटीन लो एमिनो एसिड आसियो एमिनो एसिड रो एमोनिया आसियो तो प्रोटीन भांगी देले आम डाइजेस्टिव प्रोटीएज एंजाइम सब अच्छी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने पई तो से प्रोटीएज एंजाइम आम बॉडी रे कौन करे प्रोटीन को भांगी देकी कौन तैयार करियो एमिनो एसिड नाउ हाउ एमिनो एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एमिनो एसिड रो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है एमोनिया प्रोड्यूस होबो दैट वी विल आल्सो डिस्कस सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड इज CHRCOOH This is the chemical formula of amino acid. बुझिपाल छ एमिनो एसिड फॉर्मूला होची एडा COOH एपट रहिला NH2 तळे रहिला R any chain it may be any chain and here hydrogen so this is your amino acid and from amino acid we can get ammonia NH3 we can get from this amino acid how now it have to when amino acid undergoes oxidative deamination it will undergoes a process which is known as oxidative deamination मतलब ammonia amino group कौन हो रिमूव हो से deamination लिखाई deamination this is a process chemical process so amino acid will undergoes a process known as oxidative deamination and what will be the product of this reaction or of this process now it will produce CHCOOH तले रहिला R plus ion plus NH2 माइनस देखो छुआ जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस हम कहार एमिनो एसिड रे तो ये बर्तमान ब्रेकडाउन कर ब्रेकडाउन करके एमोनिया ग्रुपटा सेपरेट है एमोनिया ग्रुप को कौन हो सेपरेट हो आउ जो बाकी रहा ये सब गोटे जगार रही है बुझिपाल एमोनिया अलग हो आउ बाकी सब गोटे रही जो एमोनिया अलग है ब्रेकडाउन है कौ प्रोसेस रे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस रे से दुटा मुझे देखी तुमको CCOOH R ऊपर रहा H पॉजिटिव आयन है कारण अलग होती आउ ये हूँ NH2 नेगेटिव आयन देख NH2 नेगेटिव आयन जो रहा इट कैन नॉट बी रिमेन एज सच इन दिस फॉर्म सी यही फॉर्म रे बेसी समय रही पार ना ये जो NH2 माइनस देखुच ये फॉर्म रे बेसी समय रही पार ना इट इज अनस्टेबल बिकॉज इट इज अनस्टेबल ये बॉडी भितर NH2 माइनस रूप से बेसी समय रही पार ना तो ये कौन हम न्यूट्रालाइज होगापाई स्टेबिलाइज होगापाई H+ आयन रो हेल्प नब कार हेल्प नब H+ आयन दिस इज ए प्रोटॉन है H+ means proton so NH2 minus will combine with one H+ ion clear with one H+ ion and it will convert to NH2 थिला H गुटे एक्स्ट्रा ऐड है तो ये कौन है गला NH3 माइनस प्लस क्या हुआ न्यूट्रलाइज हो गया तो NH3 रह गया तुम्हारा रहा कौन NH3 बुझेगा ना NH3 की बॉडी केमी प्रोड्यूस फास्ट आम खाइले प्रोटीन बा आम बॉडी भितर भी प्रोटीन अच्छी सी प्रोटीज एंजाइम सब भांगीदेले कौन हो गला ना एमिनो एसिड पाइगले आम सो एमिनो एसिड बर्तमान कौन हम ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस हम तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस रे अमीनो ग्रुप अलग हो NH2 अलग हो NH2 अलग जो हम सी नेगेटिव फॉर्म रे अलग हम ये जेहेतु नेगेटिव फॉर्म रे अलग हो ये बेसी स्टेबिलाइज नुह बा ये अनस्टेबल सो इट विल tend to be neutralized or to be stabilized for this H+ ion will help है ना नहीं H+ आयन को हेल्प करिवो तो NH2 ये H मिसिकी कौन हो NH3 दिस इज द एमोनिया ओके सो इन दिस प्रोसेस इन दिस
वे योर नाइट्रोजन वेस्ट एमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एटा आम बॉडी भितर यही प्रोसेस रे कौन हो एमोनिया प्रोड्यूस हो बर्तमान आम एक एक्सक्रीट केमी करिया आम बॉडी बाहर बाहर को केमी काढ़ा है तो बर्तमान मत गोटे कथा कहूँ आम एक काढ़ापी कहीं चाहूँ आम बॉडी भितर रही किसी प्रॉब्लम हम कि इज देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ NH3 if it will remain in our body or are there any side effect or bad effect inside our body if ammonium NH3 will remain in our body for a longer period जदि आम बॉडी भितर एमोनिया बेसी लॉन्ग टाइम रहिबो तो आम बॉडी रे किछि बैड इफेक्ट पकाउछि कि नहले आम ताको काढ़िया पे काहे जाउछे हम बॉडी सेमति रहू ना यस ओके देयर आर सम एडवर्स और बैड इफेक्ट ऑन दिस of this ammonia inside our body. So what are the misadvantages or effect? Normally ammonia is highly toxic. First कथा हला छुआ this is very toxic एटा विषाक्त आम बॉडी पाई भलो नुह this is a toxic so it should be removed immediately ammonium should be removed quickly from our body as soon as it is formed जते शीघ्र से तैयारी होबो सते शीघ्र ताको बॉडी रू रिमूव कर देबा आवश्यक मन रहला एमोनिया इज हाईली टॉक्सिक सो फॉर दिस रीजन एज इट इज हाईली टॉक्सिक इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी क्विकली as soon as it is formed जते बेले से तैयारी होबा हम बॉडी रे संगे संगे ताको रिमूव कर देबा आवश्यक एंड what is another character of ammonia is it is highly soluble in water H2 means water ammonia is highly soluble in water and for removal of ammonium there is need of much amount of water हला गोटे एमोनिया को काढ़िया पई हेले हम बॉडी रो आमे बहुत अमाउंट रो वाटर आमे मीन्स नुहे एनिमल मान कथा मुझे कहूँ जो एनिमल भी एमोनिया को एक्सक्रेट करूथबो तो ताकू कौन दरकार होबो ना बहुत अमाउंट रो वाटर आवश्यक होबो हला जल चाहिए उसको निकालने के लिए बॉडी से एमोनिया को समझ में आ गया ना सो एमोनिया 1 ग्राम एमोनिया नीड्स 300 to 500 ml of water for why to be removed from our body आम बॉडी रू 1 ग्राम एमोनिया आम बॉडी रू नुहे एनिमल बॉडी रू है 1 ग्राम एमोनिया को रिमूव करिया पाई हेले 300 ରୁ 500 ml रो कौन आवश्यक छुआ ना जलर आवश्यकता अच्छी बुझिपाल छुआ गोटे ग्राम जदि आम बॉडी भितर गोटे ग्राम एमोनिया प्रोड्यूस होची गोटे एनिमल बॉडी रे तो ताकू काढ़िया पाई हेले 300 ରୁ 500 पाखापाखि हाफ लिटर जल दरकार आम बॉडी रू काढ़िया पाई हेले सेति पाई एमोनोटेलिजिम किए क्या पाखे देखा जाए नॉर्मली एक्वाटिक एनिमल जलचर प्राणी मान पाखे देखा जाए कारण ताको पाखे जलर अभाव न थाए आम पाखे जलर अभाव देखा जाए आम से एमोनोटेलिजिम नुह आम एमोनोटेलिक एनिमल नुह आम पाखे सते सफिशिएंट अमाउंट वाटर ना कि आम 4 ग्राम 5 ग्राम एमोनिया को आम बॉडी रू बाहर करदे तो एमाने एमोनिया क्या बॉडी रे देखा जाए क्या बॉडी रे प्रोड्यूस हुए नॉर्मली एक्वाटिक एनिमल जो माने वाटर रे रुहंती से कौन देखा मोड ऑफ एक्सक्रेशन केमी होता है एमोनोटेलिजिम से एमोनिया बॉडी रे प्रोड्यूस हुए टॉक्सिक रूप से को एमोनोटेलिक कहती जो मैंने एक्वाटिक एनिमल एग्जांपल भी गोटे दुटा कहि तुमको है तो मन रखिथ एमोनोटेलिक एनिमल पाखे 1 ग्राम एमोनिया को काढ़ापी 300 ରୁ 500 ml वाटर दरकार आउ ये जेहेतु हाईली सल्युबल ये इजिली वाटर रे सल्युबल हो मिसीज आउ इजिली भी बाहरी पार किंतु वाटर बहुत दरकार समझ में आ गया ना So these are all about your ammonotelism and the example of ammonotelic animal को animal माने ammonotelism दिखाती these are normally aquatic animal माने normally कौन करती aquatic माने जलचर प्राणी जल जो माने रहती से माने normally ammonotelism process दिखाती aquatic animal for example तुमरो रहिला एमोइबा है पारामेशियम
पारामेसियम है आउ टेडपुल लार्वा बेंगर जो लार्वा देखुच ताकू कहते टेडपुल लार्वा क्लियर टेडपुल लार्वा से जल रुहति है बोनीफिसेस जहाँ जो मछरे कंटा थाए है आर्थवर्म एमाने भी किसी बेले बेले कौन करती ना वाटर रुहति है पूरी फेरा जमी कि फॉर एग्जांपल स्पंज रहा है तो एमाने सब कौन करेंगे एमोनिया एक्सक्रीट करती बॉडी एज बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एक्वाटिक एनवायरमेंट से माने वाटर रे रोचंदी से माने पाखरे वाटर अभाव नहीं तो से माने सेति पई जेहेतु एमोनियाटा हाईली टॉक्सिक से माने वाटर रे कोन करंती ताको मिक्स कर देबे बॉडी भितरे देई ताको इजीली एक्सक्रीट कर देबे एटा मने रखितो हाईली टॉक्सिक जेहेतु आम बॉडी रे हमें बेसी समय स्टोर करके रखि परिबा नाही एटाको जते शीघ्र बॉडी रो काढी दबा न ताको अधिका अमाउंट रो वाटर सहित मिसे कि ता टॉक्सिसिटी को हमें कम करि परिबा ता विषाक्त जो रहिला विषाक्त रो अमाउंट को विषर अमाउंट को बा टॉक्सिसिटी के हमें रिड्यूस कर दबा वाटर सहित मिसिने सेटा कोन है जो हाइड्रोलाइज हो कमी जो सो दीज आर ऑल अबाउट योर ammonotelism. Okay, in next class we will deal with ureotelism modes of excretion. There are three modes of excretion. One is ammonotelism and another two also there. One is ureotelism and another one is uricotelism. So in next class we will discuss about ureotelism and uricotelism. So thank you.